गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है स्टार रेटिंग सिस्टम फॉर SEIAA। ये टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को कहा है कि जो स्टार रेटिंग सिस्टम वो स्टेट्स के लिए ला रहे थे एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस के कंटेक्स्ट में, उसको अभी तक जो है इम्प्लीमेंट या ऑपरेशनलाइज नहीं किया गया है। तो ये स्टार रेटिंग सिस्टम क्या था? 2022 में से प्रपोज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के लिए, और ये रेटिंग जो है वो इंडस्ट्रीज़ को जो है दी जाने वाली थी पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लायंस के कंटेक्स्ट में। तो रेटिंग जो है ये इंडस्ट्रीज़ को हर साल 1 से लेके 5 स्टार्स तक दी जाने वाली थी, और इसको SEIAA जो कि है आपका स्टेट्स की जो रेगुलेटरी बॉडी एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से रिलेटेड, उनकी वेबसाइट पर इसको डिस्प्ले किया जाता कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की ये रेटिंग है, ठीक है। और इसी स्टार रेटिंग सिस्टम में जो स्टेट्स हैं उनको भी जो है रेटिंग दी जाने वाली थी, जिसमें कि ये देखा जाएगा कि स्टेट्स जो हैं वो कितनी जल्दी जो है इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस दे रही हैं। अगर वो जितनी भी इन्वायरमेंट की क्लियरेंसेस हैं वो 80 दिन के अंदर दे देती हैं तो उनको 2 पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। 0 पॉइंट्स मिलते हैं अगर वो 120 दिन से ज़्यादा लेती हैं जो है इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस देने में, ठीक है। तो जो ये प्रपोज स्टार रेटिंग सिस्टम है, ये स्टेट्स को इंसेंटिवाइज करने वाला था और स्टेट्स को रैंकिंग देने वाला था कि वो कितनी क्विकली और एफिशिएंटली एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस देती हैं। तो बेसिकली ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये स्टार रेटिंग सिस्टम लाया जा रहा था। अब इसमें कंसर्न्स क्या हैं? कंसर्न्स यही हैं कि एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस जो इंडस्ट्रीज़ के हैं सिर्फ उन्हीं को ही पर ही फोकस्ड है, लेकिन और भी तो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, जैसे सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है उस प्रोजेक्ट का या उस इंडस्ट्री का, उसको तो नहीं इसमें कंसीडर किया गया। फिर ये सिस्टम जो है वो सेल्फ रिपोर्टिंग के ऊपर जो है रिलाई कर रहा था, तो इंडस्ट्रीज़ ऑफ कोर्स ये तो नहीं है कि वो सब कुछ सच ही बताएंगी अपनी इंडस्ट्री के जो है पोल्यूशन या इन्वायरमेंट के बारे में। ये जो सिस्टम है ये स्ट्रिंजेंट नहीं है, तो स्टेट्स को जो है आप रैंकिंग दे रहे हो कि वो कितनी जल्दी मचा रही हैं इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस देने के लिए, और उसकी वजह से जो है वो स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस की या इन्वायरमेंटल नॉर्म्स की नहीं हो सकती थी, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको कोई ऐसा बेनिफिट भी नहीं दिखता कि वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगी तो उनको जो है कुछ बेनिफिट होगा, और पब्लिक में भी अवेयरनेस नहीं है, लोगों को भी नहीं पता था कि ये सिस्टम जो है वो किस तरह से काम करता है। तो क्यों डिले किया गया? क्योंकि तमिलनाडु बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में केस कर दिया था इस सिस्टम के अगेंस्ट, कहा था कि ये सिस्टम आर्बिट्रेरी है और ये स्क्रूटिनी को डाइल्यूट कर देगा। मिनिस्ट्री ने लेकिन क्लैरिफाई किया कि इस रेटिंग क्राइटेरिया से कोई भी प्रोसेस नहीं चेंज किया जा रहा है, ना ही टाइमलाइन को चेंज किया जा रहा है। जस्ट हम जो है स्टेट्स को जो है वो क्लियरेंस देने के लिए जो है एफिशिएंट और जो है वो एम्पावर करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ओवर करप्शन चार्जेस। पॉलिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो तमिलनाडु गवर्नमेंट की जो है प्ली को हेयर करने के लिए रेडी हो गया है कि के पोनमुडी जो है उनको मिनिस्टर की जो है वो रीइंस्टेट किया जाए। इससे रिलेटेड प्ली डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में। तो हुआ क्या था कि मद्रास हाई कोर्ट में ने पिछले दिसंबर में जो है इस पर्सन को जो है और इनकी वाइफ को डिस्प्रोपोर्शनेट असेट्स केस में कन्विक्ट पाया, और इनको 3 साल जेल जो है वो दे दी गई, ठीक है। इस कपल को जो है वो असेट्स अमास करने के लिए जो है वो गिल्टी पाया गया, और सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 के जो है RPA या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर ये सज़ा सुनाई गई। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है डिस्क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया स्टेट लेजिस्लेचर में जो है वो आर्टिकल 191 में अवेलेबल है, पार्लियामेंट के कंटेक्स्ट में आर्टिकल 102 में अवेलेबल है। तो अगर हम देखें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कहता है कि अगर कोई पर्सन जो है वो गिल्टी है इलेक्शन ऑफेंसेस या करप्ट प्रैक्टिसेस के में पाए जाने की वजह से, तो उसको जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा वो मेंबर। अगर 2 साल से ज़्यादा की जेल हो गई है किसी ऑफेंस में तो भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर वो अपने इलेक्शन एक्सपेंसेस नहीं बता पाता है, अकाउंट नहीं दे पाता है, तो भी उसे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। या फिर किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में, वर्क में या सर्विस में वो खुद उसका कोई इंटरेस्ट है, वो मैनेजिंग एजेंट है, डायरेक्टर है किसी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कॉरपोरेशन में, करप्शन की वजह से अगर उसको गवर्नमेंट सर्विस से डिसमिस किया गया है, उसने
डिफरेंट ग्रुप्स में एनमिटी प्रमोट करने की कोशिश की है, या कोई सोशल क्राइम कमिट किया है, तो भी उसको जो है वो एमएलए या एमएलसी या इवन पार्लियामेंटेरियन को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उसमें ये कहा गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था अभी रिसेंटली, कि जो है सुप्रीम कोर्ट ने इनकी कन्विक्शन के ऊपर जो है स्टे लगा दिया था, मतलब सस्पेंड कर दी थी उनकी कन्विक्शन को। ठीक है, सस्पेंड करने का मतलब ये नहीं है कि उनको जो है वो छोड़ दिया या फिर उनको रिलीज कर दिया, जस्ट एक स्टे लगाया है। ठीक है, लेकिन स्टेट का क्या कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की लोक प्रहारी केस की जो जजमेंट है उसमें कहा गया है कि अगर कन्विक्शन जो सस्पेंड की जाती है तो डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो जो है ख़त्म हो जाएगी उस पीरियड के लिए जब तक सस्पेंशन हो रही है। लेकिन तमिलनाडु गवर्नर जो है उन्होंने यही कहा है कि जो ये पॉनमुडी हैं इनको हाई कोर्ट से बाकी और केसेस में जो है वो करप्शन के जो है में जो है वो पाया गया है। किसी एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने अगर उनकी कन्विक्शन को जो है सस्पेंड किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अलाउ कर दूंगा कि उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो है वो इंडक्ट किया जाए। गवर्नर ने कहा है कि कन्विक्शन को वैसे भी सिर्फ सस्पेंड किया गया है, सेट असाइड नहीं किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ओके, सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फॉरेस्ट फायर्स एट नीलगिरीज। ये टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पिछले एक हफ्ते से फॉरेस्ट फायर जो है वो कोनूर फॉरेस्ट रेंज नीलगिरीज में जो है वो बढ़ रही हैं। इवन इंडियन एयरफोर्स भी जो है वो फायर फाइटिंग एफर्ट्स में जो है अपना योगदान दे रही है। तो फॉरेस्ट फायर्स क्या होती हैं? अनप्लैंड, अनकंट्रोल्ड और अनप्रडिक्टेबल फायर किसी भी वेजिटेशन, कंबस्टिबल वेजिटेशन की। नेचुरल कॉजेज से भी हो सकती है, मैन मेड कॉजेज से भी हो सकती है। नेचुरल कॉजेज क्या होते हैं? जैसे लाइटनिंग हो गई, हाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर्स हो गए, लो ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस की वजह से। या मैन मेड में क्या होता है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की वजह से, कोई एक सोर्स ऑफ फायर की वजह से भी जो है ये फॉरेस्ट फायर्स हो सकती हैं। तो इंडिया में नवंबर से लेकर जून तक के पीरियड में ये फॉरेस्ट फायर सीजन होता है, जिसमें अप्रैल मई का जो है वो वर्स्ट फायर मंथ्स होते हैं। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट कहती है कि 36% इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है वो फ्रीक्वेंट फायर्स को प्रोन है, 4% जो फॉरेस्ट कवर है वो एक्सट्रीमली प्रोन टू फायर है, और 6% जो है वो हाईली, वेरी हाईली फायर प्रोन है। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक जो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये फायर्स देखने को मिलती हैं। तो पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें, तो पिछले एक हफ्ते में ही खासकर अगर हम देखें तो हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉरेस्ट फायर्स जो हैं वो मिज़ोरम से रिपोर्ट की गई हैं। ठीक है, साउथ इंडिया में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में ये फायर इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं। तो क्या रीज़न होता है फायर्स का? जैसे अगर हम इस साल देखें तो हाई एरिडिटी, अबव नॉर्मल डे टेम्परेचर्स, क्लियर स्काई कंडीशंस, काम विंड्स, इसकी वजह से जो है ये फायर आ जाती है। अगर लगे तो ऑफ कोर्स वो बढ़ती रहती है। फेबररी 2024 जो है वो एक्सेप्शनली हॉट रहा था सदर्न इंडिया में। मैक्सिमम, मिनिमम और मीन टेम्परेचर जो है वो अबव नॉर्मल रहे सदर्न स्टेट्स में, और रेन भी नहीं हुई, हाई टेम्परेचर्स भी प्रिवेल किए। तो उसकी वजह से जो है ये सदर्न इंडिया के डिस्ट्रिक्ट्स जो है वहाँ पर माइल्ड एरिडिटी रही और ये फायर प्रोन रहे एरियाज़। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो साइंटिस्ट जो है वो आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी का डेटा यूज़ करते हुए अंटार्कटिका में उन्होंने ये पाया है कि जो एस्ट्रोफिजिकल टाउन एट न्यूट्रिनोज, जिनको हम घोस्ट पार्टिकल्स कहते हैं, वो पाए गए हैं। ठीक है, तो आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी क्या है? एक डिवाइस है अर्थ के साउथ पोल में जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिनको हम कहते हैं न्यूट्रिनोस, वो उन्होंने डिटेक्ट कर रहा है। तो आइस क्यूब जो है कोलैबोरेशन कई सारी यूनिवर्सिटीज़ मिलकर, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन के जो है वो लीड में वहाँ पर ये जो है कोलैबोरेशन चला रही हैं, और थाउजेंड्स ऑफ सेंसर्स लगाए गए हैं 1.4 किलोमीटर बीनीथ द आइस। और ये वर्ल्ड का बिगेस्ट न्यूट्रिनो टेलीस्कोप है, यहाँ पर न्यूट्रिनोस को डिटेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ जो है वो ईस्टर्न सी बोर्ड पे जो है वो शेड्यूल्ड है, अगले 10 दिन तक ये चलेगी ऑलमोस्ट। और ये बायलैटरल ट्राई सर्विस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है इंडिया और यूएस के बीच में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023। एनवायरनमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली को जो है आइडेंटिफाई किया गया है एज अ कैपिटल सिटी जहाँ की सबसे पुअर एयर क्वालिटी है।
वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 द्वारा। इसको स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर जो है पब्लिश करती है। इंडिया की थर्ड वर्स्ट एयर क्वालिटी पाई गई है। बांग्लादेश की जो है सबसे वर्स्ट पाई गई है। पाकिस्तान सेकंड पर है। दिल्ली को सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी पाया गया है वर्ल्ड में। और बिहार का जो बेगूसराय है उसे ये टर्म किया गया है कि ये वर्ल्ड का मोस्ट पॉल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया है। 10 आउट ऑफ जो है 11 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ जो हैं वर्ल्ड में वो इंडिया में ही हैं। ठीक है। तो PM जो है पर्टिकुलेट मैटर का पोल्यूशन जो है ये इसी को ऑब्जर्व किया जाता है एयर पोल्यूशन को मेजर करने के लिए। तो पर्टिकुलेट मैटर क्या होता है? सॉलिड पार्टिकल्स द्वारा बने हुए या लिक्विड ड्रॉपलेट्स जो एयर में होते हैं। कई तरह के साइज़ के हो सकते हैं ये। ठीक है। तो ये लार्जर पार्टिकल्स जो है वो मोस्टली सॉइल से ही आते हैं। और जो पर्टिकुलेट मैटर है इसको हम प्राइमरी और सेकेंडरी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। प्राइमरी पार्टिकुलेट मैटर जो है वो जो है डायरेक्टली एमिट होता है स्मोक स्टैक या टेल पाइप से। सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर जो है वो गैशियस एमिशन से जो है वो निकलता है, जैसे कि केमिकल रिएक्शन से। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डेवलपिंग कंट्रीज ट्रेडिंग स्कीम। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो एक्सपोर्टर्स जो हैं वो ड्यूटी कंसेशंस जो अवेल कर रहे हैं UK से जो आ रही हैं शिपमेंट्स, उनको न्यू ब्रिटिश रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा डेवलपिंग कंट्रीज ट्रेडिंग स्कीम के अंदर। ठीक है। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज ट्रेडिंग स्कीम जो है एक UK गवर्नमेंट की स्कीम है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को इंटीग्रेट कैसे किया जाए ग्लोबल इकोनॉमी में। तो बहुत ही सिंपल और जेनरस प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग स्कीम है ये, जिसमें कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ ट्रेड को बूस्ट करने के लिए या तो ड्यूटीज़ को रिमूव कर दिया जाता है या रिड्यूस कर दिया जाता है। टैरिफ्स को जो है कम कर दिया जाता है एलिजिबल डेवलपिंग कंट्रीज से। तो 65 कंट्रीज़ के ऊपर ये रूल्स वैलिड होते हैं। और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ जो कि UN द्वारा डिफाइंड है, लो इनकम कंट्रीज़ या लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ जो वर्ल्ड बैंक डिफाइन करता है, उनको ये बेनिफिट्स जो है वो UK देता है। ठीक है। तो ड्यूटी फ्री कोटा फ्री ट्रेड जो है वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ जो है वो किया जाता है स्कीम के अंदर। लेकिन ये जो बेनिफिट्स हैं ये उन कंट्रीज़ और टेरिटरीज़ को नहीं दिए जाते जिनको वर्ल्ड बैंक अपर मिडिल इनकम कंट्रीज़ 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक के लिए अगर डिक्लेयर कर देता है तो। ठीक है। या फिर जो है लोअर इनकम कंट्रीज़ या लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ जिनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट UK ने साइन किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is star rating system for SEIAA. So this topic is important for your environment section. So Ministry of Environment has informed the National Green Tribunal that it's planned to implement the star rating system for states based on their promptness in awarding environmental clearances for industrial and infrastructural projects has not yet been implemented or operationalized. So what is SEIAA? Basically it's State Environment Impact Assessment Authorities, and this star rating system was introduced in 2022 by Ministry of Environment, and it is based on pollution control measures, environmental management practices, compliance with regulatory requirements, and these ratings are meant for industries and they have to apply it every year. They will be awarded 1 to 5 stars based upon their performance level, and these ratings will also be displayed on the State Environment Impact Assessment Authority's website. Okay. So as per the star rating system, the state environment impact assessment authorities would get points also on a scale of 0 to 7 based upon how much time they take to give environmental clearance. So basically they will be given 2 points for granting a clearance in less than 80 days, 1 point for clearing a project between 80 to 105 days, 0.5 points if the clearance was granted between 105 and 120 days, and they would be given 0 points if it takes more than 120 days for granting environmental clearance. So this proposed star rating system will be utilized to rank and incentivize states on how quickly and efficiently they can give environmental clearances, because the objective is to promote ease of doing business and to awaken the states from deep slumber who these states otherwise take too much time in environmental clearances, and this becomes a very problematic uh, approach for the industries or the businesses or the investors who want to invest in their states. Okay. So what are the concerns regarding the star rating system? So of course
it has limited scope because it is only focusing on environmental performance of industries, but it does not consider other important factors like socio-economic impacts, which can also impact the sustainability of that project or environment. So there is also self-reporting. So of course, this if the industries will self-report, then this report will be prone to manipulation and inaccurate reporting. Why would they want low stars for themselves? Okay, so because the focus is on fast tracking the environmental clearance system, the laws would become less stringent, and the focus will disproportionately shift towards fast tracking environmental clearance than actually adhering to the environmental impact assessment. Okay, so industries also do not see any immediate benefits of participating in this scheme. Okay, people are also not aware about this system and how they can interpret these star ratings. Okay, so why there has been a delay in operationalizing this system or this star rating system? Because a Tamil Nadu based organization who is working for the rights of fishermen challenged this system in 2022 at the National Green Tribunal and called this system as arbitrary, and said that this would result in a dilution of scrutiny of environmental impact assessment process. But the ministry clarified that this rating criteria does not seek to change any process or timelines as provided in the EIA notification of 2006. Okay. So the next topic is disqualification over corruption charges. This topic is important for your polity section. So Supreme Court has recently agreed to hear a plea by Tamil Nadu government, which is seeking to reinstate K. Ponmudi as a minister in the government. So what has happened is that the Madras High Court in December convicted Ponmudi and his wife in a disproportionate assets case, and the couple was put on a trial for amassing assets during their tenure as minister, and they were awarded a 3-year jail term along with a fine of 50 lakh rupees. So the decision by High Court triggered Section 8, subsection 3 of the Representation of People's Act, which says that uh, if any minister or any member of state legislature or parliament is convicted for more than 2 years, then he or she shall be disqualified from the date of such conviction and shall continue to be disqualified for a further period of 6 years since their release. Okay, so in the Indian Constitution also, we have the criteria of disqualification dealt by Article 191 of the Constitution with respect to state legislatures and Article 102 for the House of Parliament. Okay, so grounds on which an MLA or MLC can be disqualified are mentioned in Representation of People's Act. So he must not have been found guilty of certain election offences or corrupt practices. If the person is convicted for any offence in which the imprisonment is more than 2 years, 2 years or more than 2 years, if he or she fails to lodge an account of his election expenses, if he has any interest in government contracts, works, services, if he is a director or managing agent or holds an office of profit, if he has been dismissed from government service for corruption, if he has been convicted for promoting enmity between different groups, or if he has been involved in practicing some social crimes. So, why the Tamil Nadu government has approached the Supreme Court? Because Tamil Nadu government has said that they want a direction to the governor to act as per the advice of Chief Minister's recommendation and appoint Ponmudi as a minister. The state has said that Supreme Court judgment of Lok Prahari case has said that if the conviction is suspended, then the disqualification will cease to operate. Last week, what has happened is that Supreme Court has stayed the conviction of Ponmudi in a disproportionate asset case, but Tamil Nadu governor is saying that since Ponmudi was held guilty by High Court for a serious offence amounting to moral turpitude relating to corruption, he cannot reinduct him in the Council of Ministers, and it would be against constitutional morality. Governor has also said that conviction has only been suspended and it has not been set aside by the Supreme Court. Okay. So the next topic is forest fires at Nilgiris. This topic is important for your environment section. So for the past 1 week, forest fires have been raging in the Kunur forest range of Nilgiris in Tamil Nadu. So recently, even Indian Air Force joined the
ongoing firefighting efforts of State Forest Department. So, what are the forest fires or wildfires? So, these are basically unplanned, uncontrolled, and unpredictable fire in an area of combustible vegetation. So, it can be caused by natural causes like lightning, high atmospheric temperatures, low humidity, and there could be also man-made causes like jhum cultivation and any other source of fire. So generally, November to June period is the forest fire season in India, and April to May is are the worst fire months across the country. So in Indian State of Forest report also, it has been said that more than 36% of India's forest cover was prone to frequent fires, and about 4% of the forest cover was extremely prone to fire, and 6% was very highly fire prone. So, according to Forest Survey of India, severe fires break out in dry deciduous forests. Okay, so in the last few weeks, highest number of forest fires have been reported from Mizoram. In South India, most forest covered areas of Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu have seen fire incidents over the past week. So, why the fires have been reported this year? Because of high aridity, above normal day temperatures, clear sky conditions, and calm winds. Even February 2024 was exceptionally hot over southern India in particular. Over the past 2 months, the recorded maximum, minimum, and mean temperatures have been above normal over the southern states, and there has been absence of rain and prevailing high temperatures, which has caused this um, mild aridity and uh, made these areas fire prone. Okay. So the next topic is Ice Cube Neutrino Observatory. So scientists who have been using the data from Ice Cube Neutrino Observatory in Antarctica, and they have found the first evidence of ghost particles or neutrinos. So what is Ice Cube Neutrino Observatory? So basically it's a device at Earth's south pole which detects subatomic particles called neutrinos, and it has been built and maintained by IceCube Collaboration, which consists of many universities worldwide, led by University of Wisconsin Madison, and it consists of thousands of sensors which have been buried more than 1.4 kilometer beneath the ice, plus multiple detectors above the surface also, and it is the world's biggest neutrino telescope. So the next topic is Exercise Tiger Triumph. This topic is important for your security section. So Exercise Tiger Triumph is scheduled on the eastern seaboard, and it will continue until 31st of March 2024, and it's a bilateral trial service humanitarian assistance and disaster relief exercise between India and the US. So the next topic is World Air Quality Report 2023. This topic is important for your environment section. So Delhi has been identified as the capital city with the poorest air quality according to a new report by World Air Quality Report 2023. So it has been published by Swiss organization IQ Air, and India has been found to be having the third worst air quality in the world. Bangladesh remains at the top spot, Pakistan at the second, and it has identified Delhi as the most polluted capital city in the world. Bihar's Begusarai has been termed as the world's most polluted metropolitan area. 10 out of the top 11 most polluted cities in the world are from India, and other being Lahore in Pakistan. 96% of Indian population experiences PM 2.5 levels more than 7 times the annual PM 2.5 guidelines by WHO. So, what is particulate matter? It is made of solid particles and liquid droplets in the air. And in general, any type of burning or any dust generating activities are sources of particulate matter, and they come in different sizes. Okay, so like large particles come mostly from soil, small particles come from burning of fossil fuels, and these particulate matter can be divided into primary and secondary categories. Primary PM is basically the emitted from a smokestack or tailpipe. Secondary PM forms from the sources of gaseous emissions like through chemical reactions. Okay. So the next topic is developing countries trading scheme. This topic is important for your economy section. So exporters who are seeking to avail duty concessions on shipments to UK will have to adhere to the new British rules under the Developing Countries Trading Scheme. So this scheme was introduced by UK government to facilitate developing countries to integrate them into global economy
and create stronger trade and investment partnerships with them, and also to strengthen supply chains. So basically, it's a simpler and more generous preferential trading scheme which has been designed to boost trade with the developing countries so as to support their development. So basically, it removes or reduces rates of duty or tariff on imports from eligible developing countries into the UK, and it also enables UK businesses to access thousands of products from around the world at lower prices, reducing costs for UK consumers. And this scheme is applicable for 65 countries which have been defined as least developed countries by the United Nations, or low income countries, or lower middle income countries by World Bank. So it will provide duty free, quota free trade to low and least developed countries on everything but arms, of course, and duty free, quota free trade on 85% of eligible goods to most low income countries and low and middle income countries. But of course, these benefits do not extend to countries and territories which have been deemed by World Bank as upper middle income countries for 3 consecutive years, or to those lower income countries and lower middle income countries with whom UK already has a free trade agreement. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.